Question number 1. The Indian Air Force participated which exercise in Greece from March 31 to April 11, 2025? एक्सरसाइज का नाम क्या है? INIOCHOS 25. IAF aims to improve operational capabilities and strengthen strategic defense partnerships. चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं. Which edition of the India-Russia bilateral naval exercise Indra took place from 28 March to 2 April 2025 of Chennai? तो ये कौन सा एडिशन था? 14th edition. Russia and India naval ships including Pechanga, Erezki and Aldar Saidenjapov will participate. चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं. Which part of the Ministry of Defense conducted the tri-service exercise Prachand Prahar in Arunachal Pradesh? तो कौन सा डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री का कौन सा पार्ट कंडक्ट किया? इंडियन आर्म फोर्स. सीनियर ऑफिशियल reviewed the exercise following the successful exercise Purvi Prahar in November 2024. चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं. Which organization successfully flight tested vertically launched short range surface to air missile VLSRSAM of the Odisha coast? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? DRDO and the Indian Navy. It has established the near boundary low altitude capability of the missile system. चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं. Which ministry signed contracts worth rupees 6,900 crore for 155 mm by 52 caliber advanced trained artillery gun systems and high mobility vehicles 6x6 gun twin vehicles to enhance the Indian Army's firepower? तो कौन सा मिनिस्ट्री ने साइन किया? द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. द डील बूस्ट्स द इंडियन गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं. व्हाट इज द टाइटल नेम दैट इंडियन नेवी अनाउंस मैदान इंडिया अफ्रीकन एक्सरसाइज? तो इंडिया अफ्रीकन एक्सरसाइज का टाइटल क्या है? अफ्रीका इंडिया ई मैरीटाइम एंगेजमेंट. मीनिंग क्या है? मीनिंग यूनिटी इन संस्कृत. द मैदान एडिशन co-hosted by the Indian Navy and Tanzania People's Defense Force TPDF. The event will be conducted in Dar es Salaam, Tanzania. तो कहाँ पर ये इवेंट कंडक्ट हुआ? दार एस सलाम तांजानिया में. चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं. India has achieved how many rupee the highest ever growth in indigenous defense production in 2023 to 24 since the launch of Make in India initiative? तो इंडिया ने कितना ग्रोथ किया? 1.27 लाख करोड़. चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं. Which company launched the second frigate of project 1136.6 Tabassa showcasing India's naval self-reliance? तो कौन सा कंपनी ने लॉन्च किया? द गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. कब लॉन्च हुआ? ऑन मार्च 22, 2025. With high indigenous content, Tabassa boosts आत्मनिर्भरता and domestic defense production. चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं. Which council approves rupees 54,000 crore procurement to boost defense? तो कौन सा काउंसिल ने अप्रूव किया? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC. Varunastra torpedoes for the Indian Navy approves the counter submarine threats with indigenous technology. Airborne earth early warning and control aircraft systems clear for the Indian Air Force, enhancing combat potential. चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं. The 23rd edition of the bilateral naval exercise Varuna, a testament to the enduring maritime partnerships between India and which country? India and कौन सा देश के साथ हुआ? France. Is set to take place from
19 to 22 मार्च 2025। इंसेप्शन ऑफ बरोना, बरोना का सूचना कब हुआ? 2001 में। टू नेशंस कमिटमेंट टू इनहेंसिंग नेवल इंटरऑपरेबिलिटी एंड ऑपरेशनल सिनर्जी। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। Which two country participated in exercise बंगोसागर 2025? तो कौन सा दो देशों ने पार्टिसिपेट किया? इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया एंड बांग्लादेश नेवल ड्रिल्स INS रणबीर and BNS Abu Ubaida participated in Bangasagar 2025 and cooperate in the Bay of Bengal। की ऑपरेशन क्या क्या है? द एक्सरसाइज फीचर्ड सरफेस फायरिंग VBSS drills, tactical maneuvers and the communication drills। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। Which company led the second of 5 fleet support ships for Indian Navy? तो कंपनी का नाम क्या है? LT शिपयार्ड काटुपल्ली। स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस क्या क्या है? दिस 40,000 ton ships will enhance India's Navy's blue water capabilities by replacing fleet ships at sea, extending operational reach। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। फ्रॉम व्हिच एयरक्राफ्ट इंडियाज होम ग्राउंड अस्त्र बिहाइंड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAAM was सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड? तो एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? तेजस LCA AFMK1 ऑफ द ओडिशा कोस्ट। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया? डेवलप्ड बाय DRDO। अस्त्र कैन एंगेज ओवर टारगेट्स 100 किलोमीटर्स। तो अस्त्र का रेंज कितना है? 100 किलोमीटर्स। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। व्हिच वेसल विजिट्स सियाचिलिस एट पोर्ट विक्टोरिया फॉर अ 3-day विजिट ऑन March 12, 2025 टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम टाइज? द वेसल का नाम क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल सक्सम। आफ्टर सियाचिल्स सक्सम विल प्रोसीड टू Madagascar, reinforcing India's maritime security in the India-Ocean region। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। इंडिया signed a $248 million contract with which country to upgrade T-27 tank engines, enhancing combat readiness? तो इंडिया ने किस कंट्री के साथ साइन किया? रसिया। The T-27 can cross rivers up to 5 meters deep and has a range of about 290 miles। टॉप स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर एंड अबव। एंड वेट कितना है? 41 टन्स। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। द 2025 एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी कैपस्टोन थिएटर लेवल ऑपरेशनल एक्सरसाइज was conducted over a period of 3 months from January to March 2025। Which edition of the India-Kyrgyzstan Joint Special Forces Exercise Khanjar 12 is set to take place in Kyrgyzstan from 10 March to 23 March? तो ये कौन सा एडिशन है? 12th एडिशन। सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2011। तो कब सूचना हुआ? 2011 में। एक्सरसाइज खांजार 12 हैज इवॉल्व्ड into an annual training event। The last edition of the same exercise conducted in India in January 2024। तो लास्ट एडिशन कब हुआ? जनवरी 2024 में। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स ऑफ इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम ILSS फॉर द LCA तेजस एयरक्राफ्ट्स? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया? DRDO ने। द ILSS डिजाइन टू जनरेट ब्रीदेबल ऑक्सीजन। द सिस्टम underwent testing at altitude up to 50,000 feet। फ्रेंड्स अगला सवाल देखते हैं। CISA renamed its recruit training center in Arkakonam as dash
तो ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या रखा गया है? Rajaditya Cholan RTC, honoring the Chola prince killed in the 949 C Thakkolam battle. Events अगला सवाल देखते हैं. Which organization conducted exercise desert hunt at Jodhpur from February 24 to 28 enhances tri-service synergy? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने कंडक्ट किया? द इंडियन एयरफोर्स. The exercise aimed to boost inter-service coordination and national security preparedness. Involves the कौन involves थे in Army Para SF, Navy Marcos and Air Force Guard Commandos.